हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट हाउ ऑथेंटिकेशन एंड encryption take place between your web browser to server. When you establish a connection from your web browser to the server, how the encryption take place. ये वीडियो VPN के सीरीज का ही पार्ट रहेगा। अगर आपको ऑथेंटिकेशन समझना है, अगर तो आपको ये समझना जरूरी है कि भाई इंक्रिप्शन कैसे होता है बिटवीन द client machine to the server, how the things happen. Okay, how the encryption take place between the clients and between the server. So we are going to discuss about uh, the encryption and digital certificate and how SSL handshake take place. So all these are we are going to discuss in this. So this will open a door for you if you want to understand any kind of type encryption, then you must understand this video. Okay, so before going to HTTPS, let's review a bit about that HTTP. HTTP is a protocol, a choice of protocol for the get the web page. What does it mean by that? It means uh, whatever the step you have on the server on the web page, give it to me. Okay, please send the request. आपने जैसे URL पर डाला कि भाई www.google.com, यहाँ से पहले अगर आपने HTTP, ये HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो यू किसको करता है, यूआरएल को एक्सेस करता है। यूआरएल में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है, इमेजेस, पिक्चर, लॉट ऑफ। सो HTTP प्रोटोकॉल या लाइफ वाज सो सिंपल। क्या भेजी, गेट मी योर वेब पेज। इसने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने कि गेट मी योर वेब पेज, एंड सर्वर ने रेस्पॉन्ड कर दिया, here my web page, here you go. Life was so simple, everything was going so smooth. Okay, then where is the issue? That if everything is going good, then where is the issue? Okay, it was so simple. Okay, it sent everything in the clear text. Okay, and when server respond back to the client, it was also in a clear text. Everyone can see. If anybody can snip the data between the server and client, he can see everything, almost everything. How terrible it will be if you are using online banking and you are using your username and password in the URL bar, and somebody snip between the client and server and he can see your username and password. This is really terrible. So this is we cannot use in the modern world. Okay, so HTTP was using TCP port 80, and it was a stateless protocol. Okay, what is stateless? Stateless protocol, दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं अगर आप बात करें तो। एक तो होता है स्टेटलेस एंड दूसरा होता है स्टेटफुल। अगर इनका सिंपल सा मतलब देखें तो स्टेटलेस का मतलब होता है इट डजंट कीप एनी रिकॉर्ड। ओके, लाइक यूडीपी। यूडीपी कैसे काम करता है? ही विल थ्रो द पैकेट एंड अज्यूम दैट डेस्टिनेशन विल गेट इट। द सिमिलर थिंग what the HTTP does is send the request to the server, and it will assume that the server will get that request. Okay, it means it's do not track the session. Simple means stateless protocol means it does not track the session. Stateful protocol, in other hand, it's a track every session with the every whatever you are creating a connection, it will track a connection. Okay, it will keep a record. If something missing, he will retransmit, like TCP and UDP, you can say. It's not exact, but yeah, it's a kind of that. So, and this was request response model, was working on port 80 and stateless protocol. Okay, that is the history of HTTP. Now we are in the modern world and we are everywhere, we are using
HTTPS. आजकल browser doesn't allow you to get into HTTP. If there is any site which is working on HTTP, your browser doesn't allow you to go visit that website. Okay, so let's discuss about that HTTPS. Okay, बात करें तो एच टी टी पी एस क्या प्रोवाइड कराता है? इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या प्रोवाइड कराता है? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे प्रोवाइड कराता है? बाय डूइंग इंक्रिप्शन। कैसे प्रोवाइड कराता है? जो भी भेजोगे आप वो इनक्रिप्ट भेजेगा। दैट्स हाउ इट्स प्रोवाइड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे डीएस हो सकता है, 3DS हो सकता है, एंड एईएस होता है, एंड many more. So these protocol used to encrypt the packet or encrypt the session. Okay, इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन दो टाइप का हो सकता है। एक तो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का सीधा मतलब है जिस चाबी से आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया है, सेम उसी चाबी से आप उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हो। जिस चाबी से आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया है उसी चाबी से की से आप सेम यू कैन डिक्रिप्ट द डेटा। एसिमेट्रिक का, एसिमेट्रिक में दो कंसेप्ट है। जिस चाबी से आपने डेटा को इनक्रिप्ट किया है, इसमें दो एक कंसेप्ट होता है, एक तो प्राइवेट की एंड पब्लिक की। आगे मैं डिस्कस करूंगा इनके बारे में। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होता है जिस की से आप इंक्रिप्शन किया उस की से वापस डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की चाहिए। अगर आपने प्राइवेट की से किसी डेटा को इनक्रिप्ट किया है, देन यू नीड पब्लिक की टू डिक्रिप्ट दैट डेटा। ओके, दिस वर्क एज ए टीम। अगर आपने पब्लिक को इनक्रिप्ट किया है, किसी डेटा को किया पब्लिक की के थ्रू, और अब वापस उस डेटा को आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज प्राइवेट की। इट्स वाइस वर्सा। So how things work in an HTTPS? It's actually HTTPS how things work. Let's see this. Okay. Let's say it's client sending a TCP three-way handshake and all the handshake is completed. Now the browser will send a GET request. Okay, the next will be happen the GET request. Okay, so this browser say, hey sbi.com, I want to communicate with you. लाइक से इसने साइट खोली sbi online.com, online.com। ओके, सो इसके पास दो की होगी। ओके, जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आई, या ओके लेट मी रेस्पॉन्ड विथ, इसके पास दो की होगी, एक तो होगी पब्लिक की, एक होगी प्राइवेट की। ओके, सपोज दिस सर्वर हैज अ टू की। ओके, सर्वर ने क्या किया कि हियर यू गो मैन, लेट्स गो। क्या भेजा इसने? अपनी पब्लिक की भेजी। ओके, पब्लिक की भेजी इसने यहाँ पे इस पैकेट के साथ। इसने कहा कि हेलो, देन ही सेंड द की एंड द सर्वर दिस पीसी जनरेट ए की विच इज ए सेशन की। जैसे आपने एक सेशन इस्टेब्लिश किया, जैसे इस रिक्वेस्ट भेजी इसने, तो यहाँ पे क्या किया इसने? एक सेशन की जनरेट कर ली। सेशन की, सेशन की क्या? ये सर्वर बोला कि ये लो मेरी पब्लिक की, यूज दिस पब्लिक की टू encrypt your session key and send back to your session key to me. Okay,
This is how the process happen. Okay, again क्या हुआ, let's see. सर्वर ने रेस्पॉन्ड किया किसके साथ, पब्लिक की के साथ. ओके, हियर इज योर, हियर इज माय public key. Use this public key to encrypt your session key. Okay, why does it so? Because uh, if he send without encryption key over to internet to this server, then anybody can snip that key. Okay, right? So he provide this server public key to encrypt the session key. Okay, now the session key is encrypted and received on the server. Now both have this session key, right? This client and this PC. We safely deliver our session key to the web server using वेब सर्वर पब्लिक की. ओके, हमने वेब सर्वर की पब्लिक की ली किस लिए, अपनी की को इनक्रिप्ट करने के लिए, ताकि जो हमारी सेशन की है वो इनक्रिप्ट करके सेफली हम सर्वर के पास भेज सके. ओके, अब क्या होगा, सर्वर के पास सेशन की है और इसके पास क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट की. हर के पास पब्लिक एंड प्राइवेट की है. तो जैसे ही उसने पास कुछ डेटा आया थ्रू दैट सेशन की, he will decrypt that data using its private key. And this is how session start with either each other. But this is old method. Okay, we no longer use this method. This is, I mean, we don't use this method because now we use the certificate. Let's see why we use the certificate. I will explain in the next video that why we use certificate. Okay, what if, okay, let's say सर्वर ने क्या भेजा, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई या गिव मी द sbi.com वेब पेज. ओके, सर्वर बोला कि वेट, पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करो. sbi.com इसने रिक्वेस्ट की तो ये ऐसे ही नहीं दे देगा. sbi.com इसके लिए कहा कि ये लो मेरी पब्लिक की एंड यूज योर सेशन की, एंड सो यूज दिस पब्लिक की टू इनक्रिप्ट योर सेशन की. हियर इज द प्रॉब्लम. ओके, सपोज कोई बीच में हैकर बैठा है या कोई, उसने पब्लिक की, उसने अपनी पब्लिक की भेज दी वापस क्लाइंट को. ओके, क्लाइंट को पब्लिक की भेज दी, इसके पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की है. पब्लिक और प्राइवेट की है दोनों, पब्लिक एंड प्राइवेट की है. अब क्या होगा, क्लाइंट कैसे पता चलेगा कि भाई दिस इज ऑथराइज्ड और नॉट, दिस इज करेक्ट पब्लिक की और नॉट. हाउ डज द क्लाइंट विल गेट टू नो दिस इज right key or not? Well, there is no way. There is no way this client can identify this is a, I mean, genuine public key or not. Because जब सर्वर भेज रहा तो क्या किया हैकर ने, इसकी पब्लिक की यहीं रोक दी और अपनी पब्लिक की इसको भेज दी. जैसे ही भेजेगा ये क्या करेगा, उस पब्लिक की के थ्रू अपनी सेशन की इनक्रिप्ट कर देगा एंड सेंड बैक टू दी दिस रोग सर्वर और रोग हैकर. तो ये क्या करेगा, उस डेटा को अपनी प्राइवेट की के थ्रू डिक्रिप्ट कर लेगा और जो वापस जा रहा है तो कर लेगा. Then the certificate concept is appear. Okay, सर्टिफिकेट क्या है, कैसे काम करता है, ये हम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर. सो इसमें आपने क्या समझा कि भाई हाउ asymmetric encryption take place. Okay, when the server, when client send a request to the server send a request back to the client, give its public key and say that use this public key to encrypt your session key and send back to me. Okay, then web server will decrypt that data using its private key. Okay, so I hope अभी तक जो समझ में आ गया होगा अपने आपको, एंड वी विल
discuss further in the next chapter about the certificate, how the certificate work. Okay, thank you.